Okay, the first chapter in plus 2 that is the solution, and solution made up of major two components are there, that is the solute and solvent. Okay, solute and solvent, right? Solute जो लेस अमाउंट में है that is the solute और जो excess में है that is the solvent. You can say that when sugar dissolve into the water, sugar act as a solute and water act as a solvent, right? Okay, so that we can say that in our syllabus mainly binary solutions are there. Binary solutions are those in which two components are there. Ternary solution, three components are there. Quaternary solutions, four components are there, right? For example, binary solution, water के अंदर sugar dissolve किया, two component binary. वाटर के अंदर शुगर के साथ मैंने सोल्ट भी डाल दिया, दैट इज द थ्री कंपोनेंट टर्नरी. वाटर के साथ शुगर, वाटर साथ में लेमन भी डाल दिया, दैट इज द क्वार्टनरी सॉल्यूशन. बट इन आवर सिलेबस in plus 2 this is just binary solutions are there, just two components are there, right? Okay, so that solute के लिए पूरे चैप्टर के अंदर सिंबल वी आर असाइन द सिंबल. solute के लिए b सिंबल हमने यूज करना है, solvent के लिए हमने a सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना? फार्मूले में ऑल चैप्टर विल यूज द सिंबल फॉर द solute, that will be the b and the solvent a. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं सिंबल अपना. And again we have a 9 type of combinations are there. We can say that solute and solvent, solid solid, solid liquid, solid gas, solid solid, solid liquid, solid gas. In the same process, liquid liquid, liquid solid, liquid gas, gas solid, gas liquid, gas gas. So we have a 9 combinations are there. Okay, but in वो example, तो मैं example लेता हूँ अपना solid solid. What is the meaning of this? Example, taking the example of the brass, bronze, number of alloys are there in which brass is a mixture of zinc and copper. Copper less large amount में solid form, zinc large amount, small amount में solute होगा, और जो copper है that will be the solvent. So in this we can say that we have a solid solid. That is the solution. Okay, so that in this way we have a number of mixtures are there, number of solutions are there, but in our syllabus we can say that mainly 3 solution. In chemistry we can say that in chemistry lab, liquid, acid, base, salt are there. So that we are using that the solid in liquid, liquid in solid, या फिर gas in liquid. These are 3 combination, 3 solutions are there mostly जो अपने chapter में use करते हैं, right? So that the again term are there, that is the aqueous solution and non-aqueous solution. What is the aqueous solution? Aqueous solution, those solution in which water act as a solvent, and non-aqueous जिसमें water हमारा solvent की तरह काम नहीं करता, that is called the non-aqueous solution. Aqueous solution के example, water के अंदर sugar dissolve कर देता हूँ, that is the example of जिसमें water मेरा solvent की तरह काम कर रहा है, so that is the aqueous solution. Okay, and the non-aqueous, we can say that non-aqueous में कह सकता हूँ अपना simple in this way जिसमें water हमारा solvent की तरह काम नहीं कर रहा, right? That is the non-aqueous solution. एयर वाटर वेपर्स इन एयर कह सकता हूं, उसमें जो गैस है दैट इज द सॉल्वेंट एंड वाटर वेपर्स दैट इज द सोल्यूट, राइट? सो दैट इज नॉट अ नो एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस. तो जिसमें वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस. ओके, राइट? ओके, एंड देन द मेन थिंग इज दैट इन आवर सिलेबस मैंने बताया कि यस वी हैव अ सॉल्यूशन मीन solid in, we can say that liquid in solid, that is the major solution जो यूज करते हैं अपना. सॉल्ट, नंबर ऑफ सॉल्ट्स आते हैं केमिस्ट्री लैब, पुट करते हैं वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज द मेजर जो यूज करेंगे अपना सॉलिड लिक्विड. तो अब वो कहता है कि इन दिस वे उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं. वी कैन ऑब्जर्व दैट इन केमिस्ट्री लैब, दैट इज 1 मोल H2SO4, 2 मोल H2SO4, प्रिपेयर दैट 0.1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं अपना. तो these are express the concentration of the solution, right? तो solution की concentration को express करना है, concentration of solution expressed by some terms. And what is the concentration? Concentration का meaning रहता है number of solute particle present in the solution. Means we can say that कि सिंपल मैंने एक गिलास पानी के लिए उसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाला, अलग नेक्स्ट ग्लास वाटर लेते उसमें 2 स्पून के, और एक ग्लास के इसमें 3 स्पून के शुगर डिसॉल्व कर दिए. सो दैट 1 स्पून वाले में जिसमें 1 स्पून डिसॉल्व किया उसमें अमाउंट शुगर का कम, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड. 2 ज्यादा कंसंट्रेटेड, 3 स्पून डाले हायर कंसंट्रेटेड. सो दैट जितनी ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल डालता जाऊंगा उतनी कंसंट्रेशन दैट विल बी इंक्रीज.
So that is the concentration, number of solute particle present in the solution, that is called the concentration. Okay, अब वो बताता है कि solution की concentration को express करने के लिए we have some terms are there. सबसे पहली term शुरू होती है हमारे पास, that is the mass percentage, right? And we have discussed in the plus one also, that is the what is the mass percentage, right? Mass percentage means we can say that सिंपल, एक सिंपल मास का फॉर्मूला, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. 100 ग्राम मैंने क्या लिया, वाटर लिया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया, राइट? 100 ग्राम वाटर, 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व into 100 ग्राम वाटर to prepare, that is the solution. So that I am telling you, that is the 100 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट, that is the water solvent, और उसमें 10 ग्राम NaCl डाल दिया गया, राइट? That is to prepare the solution. अब मैंने कहा सॉल्यूट के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं B एंड सॉल्वेंट के लिए सिंबल A यूज कर रहा हूं, सो दैट द मास परसेंटेज सिंबल, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A, मास नॉर्मली हम अपने मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, एंड द सेम प्रोसेस हियर. मास परसेंटेज A की निकालनी है तो यस, मास ऑफ द कंपोनेंट A, मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन total mass of solution into 100. Okay, mass of component A कितना है हमारे पास, that is the 100 gram. Total mass of solution कितना हो गया, 100 पानी, 10 हुआ NaCl, collectively that is the 110 into 100. In this way we can find out the mass percentage of A. And with respect अगर हम B लेके चलते हैं तो B का मास हमारे पास 10 है अपॉन टोटल मास 110 है into 100, we can find out the percentage, mass percentage of B. Simple. That is the major thing is that इसको यूज कैसे करना है उसके आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, that is the example लेके चलता हूँ. जैसे मेंशन होगा न्यूमेरिकल्स में 10% H2SO4 by weight or by mass or W by W, all these are the same thing, right? And then what is that is the use of the term mass percentage. Okay, 10% H2SO4 by weight, what is the meaning of this? We can say that कि 10 gram H2SO4 dissolved into the 100 gram of the solution. We can say that इसी 10% H2SO4 ने हमें तीन बातें बताई. And what are these three things? कि 10 gram H2SO4 dissolved in 100 gram of solution, means we can say that mass of H2SO4 10 gram and mass of solution 100 gram and mass of water, that is 100 minus 10 90 gram. तो एक सिंपल 10% H2SO4 बाय वेट देने से तीन उसने बातें क्लियर की कि सॉल्यूशन का मास यू हैव 100 ग्राम एंड मास ऑफ H2SO4 whatever solute are there वो 10 ग्राम है एंड द मास ऑफ वाटर दैट इज 100 minus 10 90 ग्राम मास में वाटर का दिया गया है जो न्यूमेरिकल में यू कैन यूज दैट. सो दैट इज द फर्स्ट टर्म, that is the mass percentage, right? Okay, and then we moving next term, that is the ppm, parts per million. That is the term. बिल्कुल सिंपल फैशन में मूव करना है, सेम फार्मूला पार्ट पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट A निकालना है मुझे, तो सिंपल अपना वही मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मास इनटू जहां 100 कर रहे थे वहां 10⁻⁶ कर रहा हूं, बिकॉज 1 मिलियन जो होता है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्चुअली क्या है कि इन नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर देयर, नंबर ऑफ केमिकल जो पुट करते हैं वो ट्रेसेस में ऐड किए जाते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड किए जाते हैं, सो दैट इन दिस वन का अमाउंट बहुत कम रहता है बट दिस इज द एसेंशियल both concentration. So that उन medicines में you can observe that in the medicine wrapper also mention that the amount is ppm, this 10 ppm 20 ppm in this ऐसे mention रहता है. तो जब हम solute का amount traces में यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, तो उसके लिए टर्म रखी गई है parts per million ppm. तो सेम फॉर्मूला चलता है मास ऑफ कंपोनेंट, बट जहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बिकॉज हम बहुत ज्यादा माइन्यूट डेप्थ में जा रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स हमारे डिसॉल्व हैं इतने सॉल्यूशन के अंदर. सो दैट द सेम प्रोसेस है, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस आर देयर कि यहां पर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया जाएगा. Okay, and next term, that is the we have two terms are there, and then we can say that
The next term, that is the molarity, and that is the major one, right? Molarity. What is the molarity? Definition: we know that number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Molarity symbol is capital M, right? And the definition is number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Against that volume of the solution in milliliter, then multiply by 1000. And the main thing is that, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पर अपना 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम एसिड डिसॉल्व किया गया, एंड इसका वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ 120 ml ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज गिवन. सो दैट कहा गया कि फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. Main thing, volume we have 120 put here. Main thing, and next one, that is number of moles, and we know that how can you calculate the number of moles. Number of moles कैसे निकालते हैं? That is the given mass upon molar mass. In this way we can find out the mole. किसी भी निकालते हैं तो that away, that is the solute की बात हो तो given mass of solute upon molar mass of solute. तो given mass solute का कितना है हमारे पास 10 ग्राम. मोलर मास NaCl का कितना हो रहता है 58.5. NaCl sodium 23, chlorine 35.5, and add together to give us the 58.5. That is the molar mass of the solute. So in this way we can find the mole. Put here 10 upon 58.5 into 1000, and what is the volume? 120. So with the help of this we can find out the molarity. ठीक है ना? And what is the symbolic expression? We are using that also symbolic expression also, right? So that the number of moles के numbers के moles के लिए मैंने symbol रखा हुआ है, solute के लिए भी रखा हुआ है, right? And volume के लिए मैं लेके चल रहा हूँ V. So that and number of moles को कैसे निकाला मैंने अपना given mass के लिए लेके चल रहा हूँ W symbol, और molar mass के लिए symbol solute की बात हो रही है तो that is WB upon MB. So that and molarity, that is equal to the number of moles of solute upon volume in milliliter into 1000, और इसको break करता हूँ तो given mass WB upon molar mass into 1000 upon volume in milliliter. So in this way we can find out the molarity. कैलकुलेट करने पे सपोज दैट जो आंसर निकलता है नेबोड आया वो 0.2 आया, तो व्हाट आर द सिंबल यूनिट्स कैपिटल M, you can put that, or we can say that mole per liter. In this way you can mention that the units of the molarity. Main thing is that we use that the symbol is that is WB upon NB upon 1000, V volume in milliliter or maybe centimeter cube. So that is given mass of a solute, molar mass of a solute 1000 upon volume. So that is the first term, that is the molarity. And the second term, that is the molarity. We can say that molarity symbol is the small m. Symbol is the small m. And what is again same story, that is the number of moles of solute upon यहाँ mass of volume of solution है. That definition molarity is the number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. एक किलोग्राम में क्या होता है हमारे पास mass होता है. So that mass of solvent in grams into 1000. Same number of moles का symbol assign कर चुका हूँ solute का, that is the NB. Okay, and mass of solvent का symbol क्या रखा हुआ है हमने A. mass के लिए क्या symbol बताया मैंने अपना, that is W. So that the symbol of mass of solvent is WA in grams into 1000. Okay, and number of moles को बताया कि how can you split that, given mass of solute, molar mass of solute into 1000 upon that is the weight of solvent, that is the small m symbol, molarity symbol, and the units again calculate करके values. अगर इस केस में मैं डाटा उठाता हूँ, given mass of solute 10 ग्राम था, molar mass 58.5 था, हाँ जी, weight of solvent that is the 100 ग्राम. So that is the difference, 100 ग्राम into 1000. So we are putting that the here 120, and that is the volume of solution, and that is the mass of the cells. Solvent. That is the major difference between the small m and capital M. Fine. तो कैलकुलेट करता हूँ, suppose that is the value मेरे पास 0.3 आती है, then units are the small m लिख दीजिए और या फिर mole per kg लिख दीजिए, right? It is the same thing. So that is the units of the molarity. Okay, and this again symbol हमने use करना है
तो दैट इज द मोलारिटी टर्म। एंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के लेके चले, जो भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो हमेशा जो होता है वॉल्यूम दैट विल द चेंज, कभी भी हमारा मास नहीं चेंज होता। तो टेम्परेचर चेंज करने पर मोलारिटी दैट विल चेंज बट मोलारिटी रिमेन सेम, remember that, okay? And the last one जो we are using in chapter is the mole fraction, that is the mole fraction, symbol is the x, and what is the definition? That is it is a ratio of the number of moles of that component to the total number of moles, right? So that is symbol, मैंने कहा कि मुझे mole fraction b component का निकालना है, कंसीडर करते हैं ना b का निकालना है मुझे, तो number of moles of b component upon number of moles of total number of moles, that is n % b, okay? अभी बताया गया number of moles हम कैसे निकालते हैं, given mass by molar mass। चलो स्प्लिट करता हूँ, that is given mass upon molar mass of solute upon that is WA, again given mass number of moles of solvent के निकाले तो given mass of A upon molar mass of A, given mass of B upon molar mass of B. In this we can find out the mole fraction of B. And when we take the example, okay, example पे ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ था, मुझे कहा गया कि मोल फ्रैक्शन या NaCl का निकाल दीजिए, राइट? तो NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालने हैं। गिवन मास कितना है NaCl का मेरे पास 10, मोलर मास कितना है जी 58.5, ओके? नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं, गिवन मास वाटर का हमें गिवन है 100, मोलर मास है हमारे पास 18 प्लस अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl again that is 10 upon 58.5. So in this we can find out the units are there. Suppose that मुझे कैलकुलेट किया, मेरे पास 0.4 means that 0.4 आता है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, NaCl का 0.4 आ गया। अगर मुझे ऐसे ही मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, and shortcut we can select the sum of the mole fraction always equal to 1. If you find out the mole fraction of single term x, that is the NaCl, we can easily find the mole fraction of another term. तो यहाँ पुट करता हूँ 0.4 पुट किया 1, तो mole fraction of water कितना आ गया मेरे पास, that is 1 minus 0.4 is equal to 0.6। कैलकुलेट करने पर भी मुझे ऐसे ही मिलना है 0.6, तो सिंपल। तो अगर आपको कहा था कि मोल फ्रैक्शन बोथ टर्म्स का निकालिए, तो फर्स्टली सिंगल कैलकुलेट कीजिए आप, एंड देन विद दैट सिंगल फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर टर्म। क्या मार्क्स को रिडक्शन नहीं होंगे, आपको एक कैलकुलेशन शो करनी है, एंड अनदर वन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ another terms. So there are the four topics are today's topics. The four topics are there. That is the main thing: mass percentage, parts per million, molarity, and mole fraction. So we have actually 5. So collectively that is considering that mass percentage and ppm, right? So with respect we have 4 topics. Otherwise, अगर count करके लेके चले तो we have 5 topics. So that is the today's first topic. Okay, thank you.